Hello everyone, Prince Pipes Q2 FY22 result discussion. Here is the picture in front of you. Uh, Basically, this is a quick snapshot of financials from the BSE website. Revenue stands at 761 crore, which is pretty impressive on a QOQ basis. Net profit 76 crore, which has considerably increased from the past quarter, 17 crore to direct 76 crore. Operating margin 16%, net profit margin 10%, which is again has almost doubled from the June quarter. Stock is trading around 338 rupees, और आपने अगर देखा होगा कि there was a sharp increase in the stock price when the results were about to declared declared afterwards that ये एक मंथली चार्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है. एक शार्प इंक्रीज आपको दिखाई पड़ रहा है. अराउंड 2 नवंबर को रिजल्ट आया, उसके पहले से ही थोड़ा 28 अक्टूबर से ही मार्केट फैक्टरिंग कर रहा था. अराउंड 700 के आसपास से स्टॉक हैज इंक्रीज टू 338 रुपीज sharply in a matter of few days. Again, now the company has filed an investor presentation with the exchanges. We will go through that presentation because it is easy to understand. This is the snapshot from the presentation. Highlights of financial highlights already I have discussed. Q2 FY21 was a lockdown kind of quarter, but still comparable. वॉल्यूम में एक आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, ये कंपनी के ऊपर जो सेकेंड वेव का इम्पैक्ट है ना वो ज़्यादा रहा है. प्रिंस पाइप, वो सेकेंड वेव में इट वाज वेरी बैडली हिट कंपनी. आप वॉल्यूम में भी देख सकते हो, इट वाज शार्पली डिक्रीज टू 18,466 मेट्रिक टन. नाउ इट इज 42,845 मेट्रिक टन QOQ. तो very sharp increase, and by the way the company could produce such volume in a short span of time. Okay, growth आपको QOQ बेसिस दिखाया गया है, YOY है और QOQ भी दिया गया है, and both of this we have already discussed. Okay, PAT stands at 76 crore, which is again, the company continues to remain long-term debt-free during the quarter. Okay, dividend issue किया 1.5 rupees per share. Now on this result, the joint managing director Parag Chheda has commented. Here are comment आपके सामने that we will go through के basically management का outlook क्या है. Economy activity has started normalizing from the quarter ended September 21, supported by pent-up demand, ramp up of vaccination drive, a favorable policy mix and global revival. Our performance in this quarter reports robust revenue and EBITDA increase due to our focus on volume growth in plumbing and SWR segments, led by the pickup in urban real estate demand, new project launches and sustained demand from tier 2-3 cities. Several strategic efforts are already underway, delivering results. Our goals are set on continuing to drive our 3-pronged strategy centering on organic growth, operational excellence and progress aligned to ESG objectives. We have been able to increase the market share on the back of ongoing industry consolidation. Given this trajectory, we are moving in the right direction as we continue to strengthen our business fundamentals. Okay, एक ब्रॉड आउटलुक दिया है कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने. रिवाइवल हुआ है, बाय द वे वैक्सीनेशन आपको पता है कि काफ़ी अच्छे से अपने देश में हुआ है, एंड इट वाज रैपिडली डन. इस वजह से रियल इस्टेट में तो ऑलरेडी एक बूम इज ऑलरेडी अंडर वे, and that is getting translated in this revenue and profit margin. 10% profit margin is good.
I would say, for such company. Profit margin 10% is pretty good performance. आगे मैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने प्रोजेक्ट करूंगा. इट्स फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दे हैव गिवन. क्विकली वी विल जस्ट ट्राई टू टेक अ आउटलुक. ये कंपनी का ऑफरिंग्स है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस में डिस्कस किया गया है. दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रिंस पाइप. और एक फैसिलिटी 2019 में उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड नाउ इन 2021 दे आर स्टार्टिंग वन कैपेसिटी, installed capacity upcoming at तेलंगाना. तो तेलंगाना में इस साल they are coming up with the facility, and it will be the Telangana plant has commenced its operations way before our time schedule, and it's currently operating at 4,000 metric tons. The total capacity of 50,000 tons will be executed in a phased manner over the next 2-3 years. This move shall aid us to discover more opportunities in a southern market. So again I would like to show you the manufacturing facilities. एक कोल्हापुर में, जयपुर में, चेन्नई में, हरिद्वार में, दादरा में और एक अतल में. तो सदर्न मार्केट में तेलंगाना जो थोड़ा सदर्न ईस्टर्न मार्केट जो है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग स्टेट्स है दोनों. वहां पे एक फैसिलिटी डालने से डेफिनेटली दे विल इम्प्रूव द आउटलुक. रुबलीजॉल के साथ इनका ऑलरेडी एक टाई अप है. आई हैव डिस्कस दैट इन फंडामेंटल एनालिसिस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगेन दे फ्लो गार्ड प्लस इनका एक ऑफरिंग है, which is they have tied up with the Lubrizol, a leading global brand, and come up with this product in the market. Okay, then finally ये एक पिक्चर आपके सामने across the past 4-5 years, एक just gist of the financial performance. There is a picture in front of you. ये net revenue आपके सामने, how it is growing, FY21 तक है. Net debt and net worth. Net debt stands 0 now. Okay, that is impressive. EBITDA margin आपके सामने, how it is increased 17.5% for FY21, and increase in the margin is shown in the basis points. PAT and PAT margin increasing very continuously in a steady manner. That is very impressive. और इस वजह से स्टॉक का थोड़ा लास्ट ईयर थोड़ा री-रेटिंग भी हुआ था, and that has sharply grown for around 200-300 लेवल से सीधा 600 के आसपास आ गया था. That time only I have taken it for a fundamental analysis. Okay, 10.7 फिलहाल प्रॉफिट पैट मार्जिन है, which is impressive. बाद में net fixed assets turnover ratio, that is fairly constant, and it's even in the FY21 it was impressive. ROE, ROCE, ये तो ठीक है, ये तो परफॉर्मेंस जो बाकी का है उसके ऊपर ये डिपेंड होगा, बट फेयरली गुड. देयर इज नथिंग टू वरी एज सच. And this was about the Prince Pipes Q2 FY22 result. Thank you for watching the video. Do share this video with your friends, relatives and like-minded people. Subscribe to our channel for interesting updates. Twitter handle और Instagram page ये आपके सामने एड्रेस है. Do follow us on Twitter and Instagram for more updates. Thank you.